अच्छा चलें, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. Speed and velocity are considered to be same. इनको same समझा जाता है, but they are not. Like we consider distance and displacement that they are same, but actually they are not. Distance is the whole length of the path, total length of the path, total distance of the path. That is called distance. ठीक है? Whereas displacement is the shortest length of the path by which we can reach a destination by using a straight line. ठीक है? Similarly, speed and velocity. The speed and velocity are considered to be same, but actually they are not. अब speed क्या होती है? It is the rate at which as someone moving or about object, at what speed is that object moving. Actually क्या होता है कि if we are talking about distance, किसी भी बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने, rather it's a car, rather it's a person, rather it's anything, rather it's any object, ठीक है. अगर we are talking about distance, the rate at which it is moving, rate का मतलब है किस रेशो से वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है. हम जो गाड़ी की स्पीड कहते हैं ना कि 20 किलोमीटर पर और या 80 किलोमीटर पर और इस तरह से, दैट इज स्पीड. क्या हो गया? इसको उधर ले जाओ, उधर चले जाओ. अच्छा बेटे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को कवर करने के लिए आप जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्पीड. उसको फिजिक्स में स्पीड कहते हैं कि व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ कर्वी पाथ ऑन द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, आप जब डिस्टेंस की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी रेट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर स्पीड. ठीक है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ की बात होगी, then the rate at which you are moving to cover your distance, that is called velocity. हैं दोनों स्पीड ही हैं, दोनों में there is no difference, but actually they are not same. Difference is in a sense के अगर हम टोटल लेंथ की बात करेंगे उसके लिए जो चीज होती है that is speed, and if we are talking about shortest distance उसके लिए जो चीज होती है that जो rate होता है, not चीज, the rate that at which we are covering the distance, the shortest distance is called velocity, and the rate at which we are covering the distance, that is called speed. Is it clear? The distance covered by an object in unit time is called its speed. कि जब डिस्टेंस की हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होंगे उसके लिए हम किसी भी चीज की स्पीड अगर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है. और देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जब हम स्पीड चेक करेंगे गाड़ी की या बंदे की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, देन दैट स्पीड इज नॉट नो मोर स्पीड नाउ, दैट हैज बिकम वेलोसिटी. कॉमन बुक पेज नंबर 36, इस पे थोड़ी सी डेरिवेशन है. वेलोसिटी की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? वेलोसिटी की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 36 पे. ठीक है. अब आए पेज नंबर 36 पे. वेलोसिटी को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है सारा स्पीड से रिलेटेड. रेट का मतलब ये होता है कि यूनिट टाइम में एक टाइम हम स्पेसिफाइड कर लेते हैं, उस टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड. बुक पेज नंबर 36 टॉप पे देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अब इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी मैं इधर रजिस्टर पे कर दूंगी, आप देखिएगा. डिस्टेंस
distance को we have learned that it is denoted by s. Time we have learned that it is denoted by t. ठीक है. अब what is speed? Speed is actually distance traveled या distance covered divided by time. ठीक है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में. लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर. 80 kilometer is representing the distance, whereas per hour is representing the time. Okay. Now speed. Speed is denoted by v. Speed के लिए जो symbol use होता है that is v equals to t. Here we can find out any of the value. If v is missing, we will use this formula. If distance is missing and velocity is given, speed is given, then what will you do? You will check this time is in the division relation here, multiply it on the other side. So we can say that if I have to find out the value of distance or s, this t is in the division, it will be multiplied over there, v multiplied by time. Or similarly, you can say that distance is equals to speed multiplied by time. If you have to find out speed, divide distance by time. If you have to find out distance, then multiply velocity, speed, or speed and time. So this is the derivation for speed. What is actually speed? Distance traveled by an object in unit time. Its symbol is V. Its SI unit is considered to be meter per second. SI unit of speed is meter per second, where t is time, unit for time is seconds, unit for distance is meter. That are basic quantities. Now come towards this. Speed is equals to distance covered divided by time taken. Similarly, it can be said that distance is equals to speed into time. S is equals to v into t. Here s is the distance covered by the object, and it is speed quantity. Therefore, speed is also a scalar quantity. One more thing I want to add here: speed is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. बेटा ये चीजें आप साथ साथ याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी. एक भी पॉइंट मिस हो गया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके. After that, we can say that SI unit of speed is meter per second. Meter is for length, that is actually distance, and per second is for time. यहाँ तक clear? Yes, sir. Towards uniform speed and uniform velocity. The velocity tells us not only the speed of the body as well as the direction also. Velocity of a body is a vector quantity is equals to displacement of body in unit time. Same is the working as we have done for speed, but for speed it was distance traveled by, distance covered by, and for velocity it is displacement. Velocity and speed both are denoted by v. When you will write it speed, it is not bold here, but when you will write it velocity, you will make it bold because it's a vector quantity. Write it in the bold notation or mark a bar upon it or mark an arrow upon it. V is equals to displacement. Displacement is denoted by small d divided by time is t. Similarly, we can find out the value for d. T is in the denominator. It will be multiplied there. So we can say that d is equals to v into t. Here d is the displacement of the body moving with velocity v in time t. So the SI unit of velocity is meter per second. Their units are same, their symbols are same. Symbol and unit of speed and velocity is same. Clear? किंग थोड़ी सी डेरिवेशन देख लें ताकि आपको पता चले. What is velocity? First of all, you will say that velocity is displacement
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, velocity is denoted by v, rather make it bold, rather make a bar upon it or an arrow upon it। इन तीनों में से आप कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। I am making it bold, velocity is equals to displacement is d, d is also a vector quantity, make it bold, divided by time। Now if you have to find out the value of displacement, you will multiply this d over there, so d can be found out by using v times t, or simply we can say that displacement is equals to velocity when you are moving in a straight line using its direction। डायरेक्शन यूज करके जब आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, फिर उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहेंगे। इसमें डायरेक्शन यूज होती है बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन फर्दर यू विल से दैट इट्स एस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Velocity is a vector quantity because displacement is a vector quantity। Because displacement is a vector quantity। समझ आ रही है बात की? अभी हम इसकी explanation देख लेते हैं अगर आपको कोई confusion है तो। Then further you will say that symbols हो गए SI unit। Never forget to mention SI unit। SI unit of velocity is meter per second। Per second means it is -1। Is it clear? Difference is that when we are using directions, when direction is represented there, then the speed becomes velocity, otherwise simply it is speed। Now come towards uniform speed and uniform velocity। Uniform speed, uniform speed is the average speed of the body during time t। It is because the speed of, if a body is moving and it is continuously moving with same speed, you have started moving with 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने मूव करना स्टार्ट किया है, एंड व्हेन यू स्टॉप मूविंग स्टिल योर स्पीड वाज 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है यू हैवंट चेंज्ड योर स्पीड, योर स्पीड वाज द सेम as you have started till and it was same। मतलब रास्ते में आपने कहीं पे भी स्पीड चेंज नहीं की, then this speed is known as uniform speed। A body has uniform speed if it covers distance equal intervals of time, however the intervals may be, however the short intervals may be। मतलब जितना मर्जी टाइम हो, आपने अगर आप 1 घंटा मूव करें ना, आपने 1 घंटा पूरा सेम स्पीड से मूव किया है, then you are moving with your uniform speed। Is it clear? Yes, ma'am. You are traveling up velocity का मतलब velocity नहीं समझ आई है, uniform velocity नहीं समझ आई। The same thing कि आप किसी एक डायरेक्शन में specifically you are showing your direction and you are moving। ठीक है, आपने मूव करना स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, यू वर मूविंग द डिस्प्लेसमेंट। आपने 5 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 10 मिनट्स में, फिर 15 मिनट्स में, टिल लास्ट मिनट योर स्पीड वाज द सेम। योर स्पीड वाज द सेम एज यू हैव स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी स्टार्ट से लेकर एंड तक वही रही है, आपने वेलोसिटी चेंज नहीं की, देन योर दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। In the uniform speed it was for distance and speed, and for uniform velocity it is displacement and velocity। Clear? Yes, ma'am.